दोस्तों, एक तो स्वागत है आपका फिर से इस लाइव चैनल पर। हम हैं आज जेमी ऑल्टर और हम सब बात करेंगे क्रिकेट को लेकर। इट्स वी बीन वेटिंग अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम फॉर। आई गॉट माय कॉफी, आई गॉट मल्टीपल स्क्रीन्स ऑन टुडे। जिस कमरे में हूँ, जहां पे बैठूंगा मैं, कोई भी लोग आए जाए घर पे, मैं तो भैया टीवी पे नजर रखूंगा, फोन पे नजर रखूंगा, गेस्ट रूम वाले टीवी पे नजर रखूंगा, एक टैब खोल के, लैपटॉप खोल के, जो भी डिवाइस है, क्योंकि भैया ये टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कह रहा हूँ पूरी तरीके से जान के से कि आज बारिश के चांसेस बहुत बहुत हैं। सेंचुरियन सुपर स्पोर्ट पार्क, सॉरी, सेंचुरियन पे रेन फोरकास्ट इज नॉट लुकिंग गुड। लेकिन कोई बात नहीं, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें जुड़ना है इस पूरे 5 दिन के टेस्ट मैच से। दिस इज इंडियाज नाइन्थ टेस्ट टूर ऑफ साउथ अफ्रीका। और पिछले 8 जो हुए दोस्तों, 7 जीत चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, अपनी टीम नहीं। एंड द बेस्ट रिजल्ट इज अ ड्रॉ, यानी कि 8 टूर में अब तक कोई भी इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका जाकर एक टेस्ट सीरीज नहीं जीत चुकी है। क्या इस बार पासा पलटेगा, पलड़ा भारी पड़ेगा साउथ अफ्रीका पर? आई एम नॉट सो श्योर, क्योंकि दोस्तों यहां जब मैं अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि सीरीज का फाइनल स्कोर क्या होगा, ये मैं इस नजरिए से नहीं कह रहा हूं कि एक टीम तगड़ी है, एक टीम कमजोर है, किसी के पास कॉम्बिनेशन दिक्कतें हैं, किसी के पास यूथ और एक्सपीरियंस का मिक्स नहीं है, किसी के पास फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। बात यह है कि जब आप केवल एक 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलते हो, तो जो टीम पहली मैच ले जाती है वो सीरीज नहीं हार सकती, और जो टीम हारती है वो पहला टेस्ट मैच, उनके लिए वापस आना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो टीम वापस आ भी गई तो क्या होगा? एक एक, यानी कि इंडियन टीम जो, जैसे कि मैंने कहा था, 31 साल से साउथ अफ्रीका जारी है, क्या ये टीम सीरीज जीत सकती है? काबिलियत है, प्लेयर्स हैं, मोटिवेशन है, बॉलर्स हैं। लेकिन बात यह कि अगर कहीं ना कहीं टेम्बा बबूमा की टीम पहली टेस्ट मैच ले जाती है, जिसके चांसेस अच्छे हैं गिवन द कंडीशंस, द हार्ड बाउंस एट सेंचुरियन एज वेल एज द रेन फोरकास्ट, तो रोहित शर्मा की टीम सीरीज जीत नहीं सकती है। मैं पूरा विश्वास रख सकता हूं इस टीम से कि वो 1-1 सीरीज स्कोर लाइन बना ले, लेकिन 2-0 इंडिया को देखकर मुझे बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर 1-1 हो गया तो फिर भी इंडियन टीम सीरीज जीत तो नहीं पाएगी। इस लिहाज से मेरे पास 5 सवाल है आज टीम इंडिया के लिए। ऑफ कोर्स बारिश की बात हो गई, चांसेस बहुत है, लेकिन अगर आप टॉस जीतते हो, अगर बारिश है, बेशक आज पूरा दिन नहीं मिले, और अगर रोहित शर्मा टॉस जीते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इंडियन टीम ऊपर नहीं, नीचे देखकर डिसीजन लेती है टॉस पर। यही हुआ था ओवल के मैदान पर, जहां इंडियन टीम WTC फाइनल हारी थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां साउथ अफ्रीका की बात करें, 5 दिन का टेस्ट मैच बहुत बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 4 दिन, 3.5 दिन के टेस्ट मैचेस काफी कॉमन हो चुके हैं, खासकर जब उनके पास 4, 5, 6 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हो। और हमारी टीम के बैट्समैन, कुछ बैट्समैन हैं जो अभी भी स्ट्रगल करते हैं शॉर्ट पिच गेंद से। तो मैं चाहूंगा बारिश को देखकर, ऊपर देखकर, नीचे भी देखकर, अगर रोहित शर्मा टॉस जीते हैं तो वो बॉलिंग ले। आपको 20 विकेट लेने की जरूरत है, और आपके पास मेरा मानना है कि वो बॉलर्स हैं। अब आते हैं बॉलर्स पे। सवाल नंबर 2, पिछली बार जब इंडियन टीम गई साउथ अफ्रीका 2 साल पहले, जडेजा इंजर्ड थे, तो पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया ने 4 सीम ऑप्शन, जिनमें से एक शार्दुल ठाकुर थे, और रविचंद्रन अश्विन को खिलाए। अब यहां पे अश्विन और जडेजा की अगर हम मुकाबला करेंगे, अगर हम उनको तोलेंगे, तो बात उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स की नहीं है साउथ अफ्रीका में, बात यह है कि कॉम्बिनेशन क्या सही है। और एक बार फिर से मुझे लगता है कि जडेजा अपनी बैटिंग को लेकर अश्विन से ज्यादा टीम में आएंगे। बॉलर की तो कोई बात नहीं है, अश्विन इज अ मच बेटर बॉलर देन जडेजा, बट वी हैव सीन व्हेन इट कम्स टू ओवरसीज टेस्ट मैचेस, इंडियन टीम मैनेजमेंट्स, बी इट कोहली एंड शास्त्री, बी इट द्रविड and Rohit Sharma, they value Jadeja's batting over Ashwin's bowling, which is unfair, inaccurate in my estimation. I would want to see Jadeja and Ashwin play, but I know the question is going to come down to Ashwin versus Shardul. तो आप बताइए, would you like to see Jadeja and Ashwin or Jadeja and Shardul Thakur? यानी कि सवाल है Jadeja, so Ashwin versus Shardul Thakur. I personally, I've been a big fan of Shardul Thakur in overseas test matches, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओगे, तो आपको अश्विन और जडेजा दोनों खिलाने पड़ेंगे। दोनों अलग स्पिन क्वालिटीज डालते हैं, दोनों बहुत बहुत काबिल ऑलराउंडर्स है। आई पर्सनली, जस्ट फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच, वुड वांट टू सी अश्विन एंड जडेजा विद शार्दुल स्टिकिंग आउट। अब रही बात पेस बॉलर्स की, अगर 3 स्पेशलिस्ट पेस बॉलर्स हो, तो वो तीसरा कौन होगा?
Bumrah hai, Siraj hai. Will it be Mukesh Kumar, who played in the West Indies, personally did not impress me much, does not bowl much beyond 130, or would it be Prasidh Krishna, जो अब तक टेस्ट मैच नहीं खेल चुके हैं, वनडेज खेल चुके हैं, काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका वनडेज में, T20 खेल चुके हैं, वहां कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी हाइट देखकर, उनका शोल्डर स्ट्रेंथ देखकर, उनकी लंबाई देखकर, और जो स्किल मोहम्मद शामी टाइप छोटी गेंद वो फेंक सकते हैं, मैं चाहूंगा कि मुकेश कुमार के अलावा टीम अपना थर्ड पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को देखे. व्हाट डू यू थिंक? प्रसिद्ध कृष्णा एज द थर्ड स्पेशलिस्ट पेसर और मुकेश कुमार? अब आते हैं दोस्तों चौथे सवाल पर. इज केएल राहुल अ रिस्क एज विकेट टेकर? पार्थिव पटेल ने कहा था कि मैं देखना चाहूंगा इंडिया का कीपर वो हो जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में, रणजी क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट में, 5 डे क्रिकेट में कीपिंग कर पाए. और केएल राहुल एक फर्स्ट क्लास मैच को छोड़ के कभी भी एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल कीपर नहीं दिखे. लेकिन इस लिहाज से क्योंकि एक और बैट्समैन आपके पास नहीं है, तो लग रहा है कि केएल राहुल पहली बार एज अ स्पेशलिस्ट कीपर इस टेस्ट मैच में दिखेंगे. इज इट द राइट मूव? इज इट अ रिस्क? आई थिंक for someone who kept very well in the World Cup, who's done decently well in white ball cricket, you can expect him to do the job across 5 days of a test match, but it's also a risk. So to my mind, I would have rather gone for KS Bharat. लेकिन जब KS Bharat के पास रन नहीं है और टीम इतना विश्वास रखती है केएल राहुल में, I know it's going to be KL Rahul, but I still feel, and I'd love to hear your views here, I still feel it's a risk expecting KL Rahul to keep wickets in 2 consecutive overseas test matches. और आखिरी सवाल दोस्तों, क्या इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? I spoke about it at the start of this live. I believe chances अच्छे हैं, but I'm somewhat, maybe I'm pessimistic, maybe I've seen too much of India South Africa Test Series in South Africa to remain positive. पिछला टूर जो था 2 साल पहले, मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट था. मैंने इसी चैनल पे कहा था कि मुझे लगता है कि ये बेस्ट चांस है एक इंडियन टीम का साउथ अफ्रीका जाकर सीरीज जीतने का. पहला मैच जीती टीम और अगले 2 हारी. आई थिंक इट माइट बी 1-1. माई सीरीज प्रेडिक्शन इज 1-1, बट इट स्टिल will leave an Indian team searching for their maiden test series victory on Australian, on South African soil, which is not going to make many people happy, is it? चलिए, मैंने मैंने बहुत बहुत बातें कर ली. अब आते हैं आप लोग के सवालों पर. ठीक है, 2 दिन, अच्छा, बाय द वे, बिलेटेड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. मैं 2 दिन से नहीं देखा. मेरी मदर आई हुई है मुंबई से, हम सब इंजॉय कर रहे थे फैमिली वाले, हम थोड़े घूमे, थोड़े घर पे रहे, बहुत अच्छा दिन रहा. कल मेरा एक कजन है, वो यूएस से आके अंडमान आइलैंड जा रहे थे, एक दिन का उनका ब्रेक था, तो ही केम एंड स्पेंट सम टाइम. दैट्स व्हाई फॉर 2 days you didn't see me, but I'm back. I'm here until the 29th. I'll be doing a lot of streams for you all during the course of this test series. Ame saying, considering the weather forecast, any chance of Ashwin playing? Again, given the weather, Ashwin's chances do get significantly reduced. But like I said in my monologue at the start of this stream, I would want to see Ashwin play because इनके साथ बहुत बहुत जाती हो गई. लगातार 6 टेस्ट मैच, ओवरसीज टेस्ट मैच इनको बाहर किया. I would want to see him play. Forget the conditions. You've got a man who's got 489 wickets. Forget about conditions. Just play him. He's going to get you wickets. He's going to score you runs. I think to win an overseas test match, you need Ashwin in your 11, irrespective of what the conditions are in 2023. Manish, thank you. Aapko bhi Merry Christmas. SA98 is saying his 11 is Rohit, Jaiswal, Gill, Virat, Shreyas, Rao, Jadeja, Shardul, Bumrah, Siraj, Krishna. That's pretty much what I foresee it being too as well today. Ame saying Merry Christmas to you and the family. Thank you, my friend, and to you as well. N Raj is back. He's saying KS Bharat is mediocre, both as keeper and batsman. KL has kept well in World Cup ODI to continue to keep wickets in Tests, and considering his batting strength, yes, he's done decently well in one day in white ball cricket. But this is Test match, and he's not. He's only kept in one first class match. There's nothing to say that he cannot do a good job, but it's a lot to expect someone who's not a regular a red ball keeper to do it in 5 days. So I think it's going to be potentially a big risk. ध्रुवेश कह रहे हैं मुकेश और कृष्ण, नहीं 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 नहीं, दोनों नहीं. अगर ये दोनों खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप या तो एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को बाहर कर रहे हो, या शार्दुल को बाहर कर रहे हो, या तो अगर आप सिर्फ 3 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो, तो आप बुमराह और सिराज में से एक को बाहर कर रहे हो. लाइक आई सेड, I think it's going to be 2 all-rounders and 3 specialist pace bowlers. Whether those 2 all-rounders are both spinners or 1 spinner and Shardul, I don't know. But to my mind, there is no space for Mukesh and Krishna, as you're asking me. It should be Bumrah, Siraj, and Krishna. Mukesh Kumar is a little bit too one-dimensional, a little bit too slow on the pace.
Krishna is quicker. He's got height. He can get the ball to bounce. Given the fact that Shami is not around, I would hope to see Prasidh Krishna replicate that on what I hope is his Test debut. बाकी मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूं, आप लोग को क्या लगता है इस दो टेस्ट मैच के सीरीज के बारे में? Are you surprised it's only two test matches? Why is it not three? Is it too much white ball cricket? Does Cricket South Africa stand to earn more from playing more white ball cricket? I've said it before. It's unfortunate that a test match has been compromised to fit in more white ball cricket, but you know, um, I just think a two-match series drastically reduces India's chances of winning its first test series in South Africa. Merry Christmas, Paulie. Keegan Peterson will be key player for South Africa. Yes, he did decently well 2 years ago. The last time that India went to South Africa, I don't know how much he's done in the 2 years between that, but definitely someone. Manish कह रहे हैं Prasid Krishna is fit for tests only. I will disagree. I think he's very very good in one days, but in T20s, yeah, he's not working out. I don't want to see KL Rahul keeping. Neither do I. It always looks difficult to win in South Africa. Correct. As a spectator, I have haunting memories of Donald and De Villiers. Oh हो वो 96 टूर याद होगा आपको भाई साहब कितना 96 पे ऑल आउट थी टीम 92 ऑल आउट अंडर 100 I remember that match. I was watching it in Missouri school break पे oh ho very 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 bad that was. Sushant, the voice is saying, good morning with a cup of coffee. Good morning to you. I've got my coffee. It's gotten somewhat cold because my opening monologue went about 2.5 minutes more than I thought it would. But koi baat nahi, coffee ko garam karenge stream ke baad. By the way, thank you all for joining. Please hit the like button. It's a festive time. It's a holiday time. New Year's is coming up. Let's all go into the new year with a lot of positivity, a lot of happiness, and let's also support our team. Jate jate, please like button dabaiye. Ame saying, from what I have read, CSA wanted extra white ball games as test matches lose the money. Correct. That is pretty much the situation that the two boards face themselves with, and it is what it is. But unfortunately, a two-test series, yes, India might win 2-0, South Africa might win 2-0, but in a two-test match series, you lose excuse me, you lose a lot of context. The opportunity to come back in a series, come back from one down or two down in a 4 or 5 match series is great fun to watch if a team can pull it off. But whichever team wins the first match of a two-test match series, that's it. There's no chance you're going to get more than 2-0 or more than 1-1, which I think personally is a little disappointing. थोड़ी बातें करते हैं बारिश पर मैं सुन रहा हूँ मैं मेरी बात हुई वहां से एक पूर्व कॉलीग से फॉर्मर कॉलीग वो कह रहे हैं कि भाई बारिश के बहुत चांस है नॉट अ कंप्लीट वॉश आउट बट yeah I think it's going to be a lot of on and off today a lot of stop start it does get better at super sport park over the next few days but आज का दिन मेरे ख्याल से काफी फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है हम सभी के लिए who should keep wickets again Harpreet the point is जब तक ऋषभ पंत नहीं है आपके पास एक बेहतरीन सुपीरियर कीपर होगा इन केएस भरत पर उनकी बैटिंग फिलहाल नहीं चली है जितने भी 5-6 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं you have batsmen like Ishan Kishan who are a bit maverick and then you have KL Rahul a player who's frankly in 40 odd test matches has underperformed so you're going back to an underperforming test batsman and you're saying you know what let's burden you with the task of keeping so to my mind it shouldn't be KS Bharat because his batting is not up to the mark. And it shouldn't be KL Rahul because KL Rahul is trying to get his way back into the test team, trying to cement his place. And when Rishabh Pant comes back, probably he will go. And then you burden that poor fellow with the task of keeping. Now, this is all happening because unfortunately, Rishabh Pant is absent. But to my mind, if you want an answer, yes, I will still go with KL Rahul because he offers more with the bat than KS Bharat does. But it's not a very good situation. SS90 is saying only Asian team winning a series in South Africa is Sri Lanka. That was a two-match test. Yes, correct. The only team to go there. But that came down to a once-in-a-generation innings from Kusal Mendes. And that South African team was also going through transition. I would love to see India beat South Africa 2-0, but given the history, even 2 years ago, I mean, that team was not able to set big targets and they were not able to defend targets of 212, 214. So I personally do not have any high hopes from this Indian team, which is also going through transition. But I would love to see India become just the second Asian team to win a series in Sri Lanka. But I know it's not going to happen this time. Toss, win, batter, bowl first. Given the amount of rain, bowl. You don't. I understand the risk that comes with chasing, but given the weather around, this is not like the Oval where Rohit Sharma wanted to bowl and all. No, the Oval, it was sunny. There was not a drop of rain. This is South Africa. Rain is going to play
a big factor across this test match. Even given the risk attached with batting fourth on a super sport park pitch with bounce, I would say इस बार रोहित शर्मा bowling कर लो. आपके पास bowling अच्छी है. Yes, Manish, at least three tests should be played when two top teams play. Whatever the revenue targets with white ball, maybe don't kill test cricket. Bilkul, I agree with you. Amir saying two match series is frustrating, but at least it's better than what's going to happen against New Zealand in Feb, where SA will send their A team as the series clashes with SA T20. That is what it is. This is what T20 franchises are going to do. We're seeing it now with only two countries, that is the West Indies and South Africa, but it's going to become more. It's going to become New Zealand. It's going to become England, and that is the landscape, unfortunately, that awaits us. Navjot Singh कह रहे हैं जय भाई season's greetings and a very merry Christmas. So sweet. Thank you to you as well, my friend. To you and your family. Blessings and warm greetings to you and your family. शुक्रिया आपको और आपके परिवार को भी. सुशांत कह रहे हैं KL is the only player for whom his spot is created in 11, unlike 11 players. बिल्कुल मैं कई साल से कह रहा हूँ 3-4 साल हो गए. अब obviously मैं थोड़ा हंसी मजाक अंदाज में ये कहता हूँ आप लोग से कि जो सपोर्ट, जो फेथ, जो विश्वास जनता को KL राहुल में है, वो शायद नरेंद्र मोदी साहब के बाद वो इंसान है जो किसी भी पार्टी, किसी भी टीम के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर इतना सपोर्ट उनको मिलता है. ये मेरे समझ से बाहर है कि KL राहुल जैसे खिलाड़ी को इतना होप, इतना फेथ, इतना सपोर्ट कैसे मिलता है बीसीसीआई से और टीम से. बट I wish him well. I hope he scores runs. He's got a very, very bad record in South Africa. I know he's got 100, but overall his average is just not up to par for someone you'd expect with that much talent. And कितना 40-42 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, एवरेज ठीक नहीं है. तो I hope him well, but I think he's being unfairly burdened with the task of keeping wickets in these two test matches. Prashant Malik is saying, we'll watch test cricket religiously for the first time after the World Cup final. I'm glad you stayed away, my friend. It's been tough for me. हालांकि मुझे देखना पड़ता है because I'm a cricket reporter and now analyst. But yeah, I understand why you would have stayed away for the last one odd month. It's just been a series of white ball, meaningless series after series after series. Hopefully अब इस टेस्ट मैच में कुछ मजा आए देखने का, है ना? तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलेंगे रात को मैच डे वन के बाद, अगर जो पूरा दिन होता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Why not Ishan Kishan? Because he's gone home. He has gone home apparently for mental health reasons. He was in South Africa. He was part of the squad, but he requested the BCCI to let him go home for mental issues. I hope him well. I hope he's in a good space, and that's why KS Bharat was called in as the replacement. Shaurya कह रहे हैं, I feel KL is India's Babar Azam. No, Babar is much, much better, believe me. Scores free runs more often than not, but fails at crunch situations more than often. I understand कि आप कहाँ से कह रहे हो, but बाबर फिर भी KL राहुल से कई अच्छे हैं. KL राहुल में मुझे कोई विश्वास नहीं है. Memes world is saying KL भरत से लाख गुना अच्छा है KL राहुल. Correct. As a batsman, yes, but as a keeper, unfortunately, KS Bharat is still a better keeper. Who will play one down and why? One down is most likely going to be Shubman Gill, because, like I said in many streams before this is the post Rahane, post Pujara era, जहां पे आपको एक नया नंबर 3 तो ढूंढना पड़ेगा. और क्योंकि जायसवाल युवा खिलाड़ी हैं, वो ओपनिंग करते हैं, वो आपको रोहित शर्मा के साथ एक यंग और एक्सपीरियंस ऑप्शन देते हैं. उससे बड़ा वो आपको राइट लेफ्ट कॉम्बो देते हैं. आई थिंक many people have agreed that Shubman Gill's future will be in the middle order once Virat Kohli leaves. So it's just a logical. He's batted a three before. It's between him and Jaiswal. So I think Jaiswal को opening करने दो. Gill is going to bat in the middle order for a long time. So that's why, like he did in the West Indies, where he struggled, it was a very bad tour for him. Shubman Gill will bat at number 3 in this series as well, and against England for those 5 test matches. KL is also born on some lucky constellation, as his competition always seems to drop out due to injuries, and he makes a comeback. Happened in 2021 in England, yes, as well as in one more tour also. There was another tour in 18-19 or somewhere, and in 19, there you go, in 19 versus Australia. Mayank Agarwal got knocked on the head. Shubman Gill was it a hamstring injury? So yes, I understand Ame the Gooner when you say KL Rahul is also born on some lucky constellation. But it is what it is. I personally am not a big KL Rahul fan. I've seen him do some wonderful things, but in the last 4 years, he's just not been the same. And which is sad because to my mind, he should have been by now a 3 format player, but
T20 में तो नहीं चलते हैं काफी टाइम से, अंतर्राष्ट्रीय T20, forget the IPL. I could care less what he does there. One day में इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, but then when you play the strangest knock in a World Cup final that I've ever seen, um, which is what he did in the World Cup final, I have to question his temperament and his intent. And in tests, I mean, like I said, 40 odd tests, more than 40 test matches, not an average anywhere near 40. So, and now you burden that poor fellow with the task of keeping. But anyway, दोस्तों, साथियों, भाई लोग, चलता हूँ. इजाजत दीजिए. I've got to do a couple other preview shows for other news channels before the match starts. I will see you at the end of the day's play. Hopefully, we get some play. Thank you for watching. Stick around. Love you all. Have a great day. Jai Hind.